on that. So, as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the. First, finish your thing. My Lord. Then you come to what we have observed. My Lord, yes. You are conceding that the Parliament can, but their powers heavily circumscribed. Heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this Act are you think the Parliament has exceeded its jurisdiction? If I may, if you could first expound on your initial proposition. Sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord, absolutely. That's exactly how I will address. And I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect, sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My Lord, the various articles have been read out before the court many times. My Lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. One is Article 142, which takes us to the federal legislative list. The second are a set of provisions in the body of the Constitution which confer specific power on the Parliament to make laws on identified specific subjects. These are the two sources. Now, the question before your Lordship and your Ladyship, the question before the court is, as has come out in discussion recently, is whether Article 191 by itself, and I emphasize upon the word, my Lord, by itself, is a source of legislative power. And my submission on that is that it is wrong. And I'll explain the reasons why I say that. Well, your Lordship has already seen the preamble to the preamble itself identifies the source of legislative power that the Parliament has invoked. It has invoked two sections, two articles, Article 175(2) and Article 191(2). My Lord, let's just read both of them very quickly and then compare their language to Article 142. Article 175, clause the preamble to the no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. This is similar to, but slightly, or may be conferred on it by the Constitution or by or under any one says subject to this Constitution law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now your Lordship may turn to 142. 142 is cast in different language altogether. It starts off by saying, subject to the Constitution, a Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. So the legislative power is conferred with respect to identified subjects, subject to the Constitution, and the appropriate legislature is identified. So that's how, in my humble opinion, you identify whether an article is a source of legislative power. It identifies the subject on which the legislature can enact law, and it identifies the legislature itself. Now, if your Lordships go back to 175(2), it simply says, no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by any law. It doesn't say what is the... clarify for me. You are saying Parliament does not have power to legislate except items mentioned in the federal legislative list. Is this what you're saying? My Lord, what is mentioned in the federal legislative list? Yes or no? اللحظة اللي بقول لهم فيها إني عاملة لهم برياني وسيخ كباب يصيرون كلهم. Yes,
and also on what is mentioned in the body of the constitution, and I'll just take your Okay, now lordship. I will give you an example. My reading of the fourth schedule, I mean, science is developing, artificial intelligence has evolved. Urdu में इसको शायद मसनूई ज़हानत कह लें, outer space, खलाई बसीत कह लें शायद, सोशल मीडिया, समाजी राब्ता कह लें, तो इनके मुतालिक पार्लियामान कानून नहीं बना सकती है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में से एक का भी जिक्र फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में भी नहीं है और आइन की किसी शिक में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली भी नहीं है. अब आप अटेंड कर लें मेरे सवाल को. माय लॉर्ड, मेरे ख्याल में बना सकती है. तो आपने अपना ही सवाल को तोड़ दिया फिर अपने जवाब को. नो माय लॉर्ड, मैं आपने जो लेजिस्लेटिव लिस्ट में एंट्रीज हैं उनको टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, मैंने 3 एग्जांपल दे दी ना, इनको किसी तरह से भी वहां नहीं फिट हो रही हैं और ना आइन की किसी और शिक में आ रही हैं ये बातें जो मैंने आपसे जिक्र की हैं. तो फिर पार्लियामान के पास तो इख्तियार नहीं है ना, पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकेगा क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में इसका तस्करा नहीं है. या तो आप ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं सिंध कर सकता है, वफाक नहीं कर सकता है क्योंकि बाकी सारे इख्तियारात फिर सूबों के पास हैं. That's not ये तो आप जवाब दे देना. मैं दे देता हूँ. ऐसे ब्रॉड आप अगर पेंट ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे तो उसके लिए अपनी मुश्किलात भी खड़ी हो जाती हैं. Let me explain. For example, with respect to space programs, if Pakistan has entered international treaties, हम कानून की बात कर रहे हैं. कानून then there are specific entries which allow Parliament to enact law for implementing international कौन सा treaties. एंट्री है बता दें. Well, entry 3. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, आप इसको सुन तो लीजिए ना, ऐसे ना करें ना, थोड़ी सी हमारी भी कदर कर लें. एंट्री 3 को ट्रीटीज की तो मैंने बात ही नहीं आपसे की. आप सुन भी लेना, ट्रीटी की मैंने बात ही नहीं की. मैं तो आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान चले ट्रीटी से खिलाफ ही कर रहा है काम. ट्रीटीज में क्यों जोड़ रहे हैं हम भाई? किसी को आउटर स्पेस में प्रोग्राम करना है, इंडिया ने किया, कोई ट्रीटी के जरिए कर रही है. अगर हम कल शुरू करना चाहें तो आपके मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं. तो अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा पावर पार्लियामान इस्तेमाल करेगा? माय लॉर्ड, लेजिस्लेटिव एंट्रीज में बहुत सी बता देना मुझे एक. फॉर एग्जांपल माय लॉर्ड, जैसे ये अगर इसमें ये न्यूक्लियर एनर्जी का न्यूक्लियर की बात अलग है. उसके अंदर माय लॉर्ड आपने मकलक वर्सेस मेरीलैंड का केस फिर आप लोग इतने मुतासिर हो गए हैं अमेरिकन. हम आपसे हमारा रिटन आइन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उनका आइन अपनी जगह है. मैं आपकी जजमेंट जो कि आपने भाई अब जजमेंट को छोड़ दीजिए ना. सिविल एविएशन अथॉरिटी के केस में दी, उसमें आपने आप जरा तसल्ली से बहस करें ना. बिल्कुल. या तो आप ये आर्गुमेंट पेश ना करें. जब आप ये पेश करते हैं ये बहस सामने या एक मफरूजा करते हैं कि इट इज एज गिवन, तो मैं ये नहीं मानता हूँ. या तो क्या मैं ये वापस लेता हूँ ये बात को. आप कहते हैं कि पार्लियामान सिर्फ वो काम कर सकती है जो 142 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट या एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती. या तो कहीं मैं इस बात को वापस लेता हूँ. अगर आप इस बात खड़े हुए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए. आप जवाब नहीं देते हैं. आप कहते हैं मैरीलैंड वर्सेस उसमें देख लें, उसको कम क्यों देखें? माय लॉर्ड, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो केस तैयार करके नहीं आया. नहीं जी, मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हूं, उस पे मैं सवाल उस पे बात करें ना. फिर आप ये ब्रॉड स्ट्रोक्स ना पेंट कीजिए. स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं आपसे कहीं से आप ब्रॉड स्ट्रोक्स जब पेंट करते हैं अपने लिए मसले खड़े कर देते हैं तो आप फोकस्ड रहें इसी बात पे. मैं तो 142 जी लर्नड काउंसिल यहाँ लर्नड काउंसिल आप आइटम 58 देखेंगे जी. आइटम 58 और दूसरा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, Part 2 entry 3 तो देखें. notwithstanding आर्टिकल 191, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि द पार्लियामेंट इज bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. अगर आप कर लें, I think बेहतर होगा अगर आप पहले argue as you want. Please go back to your. I apologize. You argue as you Your want. lordship should not apologize. चलिए करिए. My lord, for 2 days I have heard all our questions. करिए. Let me address those questions. करिए. This is what I'm saying. My lord, I will answer your lordship's question also. अब आप Let कर me लीजिए ना. formulate. My lord, the starting
for legislative competence is Article 142 or the body of the Constitution. Now, body of the Constitution, for our present purposes, the only article relevant is Article 191. In the legislative list, there is entry 55. Now, these are the two provisions that have to be interpreted and read. As I read, Article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14.